Hello aspirants, if UPSC civil service examination is your goal, then you must understand one thing: what can you do to crack UPSC 2026? In this video, I am going to explain in detail about the plans and strategy required to crack UPSC 2026. Students, this video is specifically for those students who are targeting the next year UPSC or IAS examinations. My name is Sankar Sir. Welcome to Rayacademy IAS. Students, details रे जानिबा पूर्वरु मु गोटे छोटो जनक विषय किछि कहया पे चाहूची. He is one of my student. एबे समस्त जानिछिबो OCS हमरो सिविल सर्विस एग्जाम रो 2024 रो मेंस कंप्लीट हेइछि. एक्सपेक्टेड अछि मेंस रिजल्ट अनाउंस हबो. अपकमिंग रे पुनी इंटरव्यू स्टार्ट हबो. सेई भितरु जने स्टूडेंट अछंती जे गोटे मेसेज लिखिथिले कि थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस ड्यू टू व्हिच आई कुड राइट द UPSC मेंस. Few months back, I was clueless about whether I could crack prelims. Forget about mains. माने सीए श्योर भी नथिले कि प्रिलिम्स भी हबो कि न हबो सी श्योर नथिले. एवं सीए थैंक यू जणी चंती गाइडेंस पाई जहा फल रे मेंस क्वालिफाई करि पारि चंती. बट टुडे आई जस्ट रोट द माय लास्ट मेंस पेपर. तांकर जो दिन लास्ट पेपर थिला, होप टू क्लियर द मेंस सीकिंग योर ब्लेसिंग्स. सीए एथरो लेखि चंती मेंस आउ आशा करू चंती qualify kariya pai. At the same time, my mains paper went really well. Thank you for constantly motivating me and guiding me. Without your personal interventions, it was impossible to even to reach to the mains stage. So these are few of the students जो माने मु देखि छि पर्सनली मानो को केते रेजिलियंस हार्ड वर्क रे समान आगु को बढ़ी चंती. ये जड़े कैंडिडेट जे कि पूर्व थर प्रिलिम्स क्वालिफाई करि पारि नथिले. ऑफ कोर्स मु ना रिवील करि परिबिनी. सो प्रिलिम्स क्वालिफाई करि पारि नथिले कोनोस ना कोनोस कारणरू से तला आसिले मु पाखको. आई अंडरस्टूड कोठी वेयर ही वाज लैकिंग एंड व्हाट कैन बी डन. सो स्टूडेंट्स, वर्तमान होची अक्टोबर मास. यूपीएससी रो प्रिलिम्स परीक्षा बेसी दूर नाही. तापाई हमको इमानको भली जेमिति हमें प्रिपरेशंस गोटे प्लान बनैथिले. आई एम गोइंग टू गिव यू द complete, I would say, the plan and strategy. How can you crack with consistency and right guidance you can get success. But before that, understanding the details, let us talk about the preliminary examinations. All of you know the date of notification is going to be announced on 14th of January 2026 for 2026 examinations. The last day of form fill up is 3rd of February 2026, and the exam date, the prelims exam date, is on 24th of May 2026. That is Sunday. 24 May रे तुम्हारो prelims होबा को जाउची. जो माने those who are going to qualify the prelims exam, they are going to appear the main examination on that is onwards 21/8 August 2026 Friday. Almost 5 days mains examinations goes. But anyways, we will talk about mains later stages on in a different video. Let us focus concentrately only on the preliminary examination. So all of you know that 24 May 2026 is the exam date. So whosoever is whatever stage, you have to ask yourself, or you may have a lot of questions in your mind that can I, or am I the right person, am I at the right stage to even appear for the prelims exam? If I start today for the prelims examinations, can I crack it? Whatever study which I have done till now, is it enough to crack the preliminary examinations? I understand a lot of complicated questions that comes in your mind. So today I'm gonna answer each and every questions of yours to really make you understand what is required
to qualify the UPSC 2026 prelims exam. Students, I'll only speak about the truth. And you have to understand the UPSC cycle, this is going on since last couple of years. वर्तमान तो UPSC तरफ नोटिफिकेशन भी बाहर करछन जे से प्रिलिम्स पूर्वरु प्रिलिम्स वन्स हेई साला परे इमीडिएटली गोटे प्रोविजनल प्रिलिम्स रे आंसर की बाहर करिवे. नॉर्मली सेटा पूरा साइकिल कंप्लीट हला परे बाहर करूथिले, एबे गोटे प्रोविजनल आंसर की बाहर करिवे बोली से नोटिफिकेशन करिसंती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल UPSC 2026 को किए वर्तमान जदि तुमे ए वीडियोटा देखुछो आगुरु प्रिपरेशंस करिनो कि जहां भी तुमे स्टेज रे अछो, हु शुड टारगेट किए UPSC 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को टारगेट करिबा दरकार. फर्स्ट ऑफ ऑल those who already started preparations in June July, okay, June July 2025 किबा तार पूर्वरु जो माने प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट करि सारिछो, मोर रिकमेंडेशंस रहिबो से माने एको टारगेट करिबा दरकार. ओके, those who have been preparing since June July, जदि जो गोटे पिला एबे नाही आमे ता ऊपर आगु को डिस्कशन करिबा. आउ के प्रिपेयर करि परिबो those who have already preparations for OPSC ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम. जो स्टूडेंट्स माने ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को भलो भाव रे प्रिपेयर करिचो, मे बी गोटे दिन आइटम देइचो कि 1 ईयर प्रिपेयर करि आसुचो, ओनली एई दुईटा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट माने ही 2026 रो UPSC एग्जाम दबा दरकार. बाकी कोनोसी कैंडिडेट दबा कथा नुह, खोला कथा. ओके, आई विल ओनली स्पीक द ट्रुथ. मु तमरो एज अ मेंटर माय responsibility is to guide you rightly, correctly. I will not misguide you. मु एमती गोटे किछि मिछ कथा कहि कि तुमको खुशी करिया पय मु एठी आसिनी. My job is to guide you what is right and what is wrong. Rest of the aspirants, you should not target 2026, you should target 2027. Ortho, who are the rest of the aspirants? The aspirants who have not started the preparations. जो माने भाबुछ एबे मु स्टार्ट करिवि, जो माने बिल्कुल भी किछि पढ़ा पढ़ी करिनो, रिवीजन करिनो, ओके, तुम मानकर टारगेट 2026 हबा कथा नुह. काहे कि you have to understand there are certain things called as logic and practicality. UPSC भली एग्जामिनेशंस को दवा पाई it requires a bit of time. मु इमति कोनोसे गोटे हार्ड जीनियस को मु देखिली जो माने 2-3 मास प्रिपेयर करी कि दिस इज नॉट अ बैंकिंग एग्जामिनेशंस कि 6 मास भीतर कम समय भीतर एग्जाम हुए, तुमे 3-4 मास भलो भाव प्रिपेयर कलो और फाइनली क्वालिफाई करिवो. जो मानकर बेस नाही पूर्वरु से माने 2026 प्रिपेयर करिवा कथा नुह, दे शुड टारगेट 2027. आ स्टूडेंट्स मु काहे कि कहि बिकॉज़ सिलेबस एते भास्ट अछि, प्रिपरेशंस केवल प्रीलिम्स रो हुएनी, प्रिपरेशन हैज टू हैव अ मेंस. एक्चुअली प्रिपरेशन इज ऑफ मेंस, प्रीलिम्स इज ओनली फॉर प्रैक्टिस. So students, those who have been preparing for their examinations since June, July or before that, or those who are already preparing for OPSC civil services examination, गोटे base theory ही सारिची, गोटे foundation बनी सारिची, सेमाने revision करी सारिचंती किछि जिंस, they should target for 2026. जो माने fresher, जो मानकर base theory हेइनी, जो मानकर concept clarity नहीं, and they should not target for 2027. अब आपण कहबे कि सर मु जानिबे केमती, हाउ डू आई नो कि मोर बेस क्लियर हेछि कि न हेछि. द बेस्ट थिंग हाउ डू यू नो इज टू गिव अ टेस्ट. कोन से प्रीवियस यूपीएससी रो पीवाईक्यू उठाओ. ओके, यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन से भी क्वेश्चन पेपर एज अ रियल एग्जाम हिसाब रे तमे दियो, एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स पार्ट, बिकॉज़ ऑब्वियसली पूर्व वर्ष रो तो करंट अफेयर्स पूर्व वर्ष रो पचार थिबे, तो करंट अफेयर्स को छाड़ी देई कि तुमे यूपीएससी रो कोन से भी गोटे पेपर उठाओ. Jodi my suggestion would be, if your score is let's say more than 70 to 80, obviously तमे जदि फॉर एग्जांपल कोनो से वीडियो देखि दिबो, तार सॉल्यूशन देखि देथिबो, देन एटा तो रेलेवेंट होबनी. जदि तमे बिल्कुल देखि न कोनो से जिंस, किबा मोर सजेशन रहिबो कोनो से गोटे मॉक टेस्ट नियो, GS1 हो किबा GS2 हो, प्रेफरेबली GS1 टा नियो, कोनो से गोटे मॉक टेस्ट नियो. जदि मोर मॉक टेस्ट रो स्कोर आसुची मोर देन 80, देन मु टारगेट मु कहिबि जे ओके ठीक अछि तुमे रेडी अछो, यू शुड टारगेट फॉर 2026. दिस इज वन ऑफ द वे तुमे निजो को जज करि परिबो कि मु रेडी अछि कि रेडी नाही. सो स्टूडेंट्स, दोज हु आर टारगेटिंग फॉर 2027, मु ऑलरेडी क्लैरिटी दे दीची. आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो
फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो माने 2027 रे केमती कोन प्लान करिवे जदि तमे चाहूचो मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो देन आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू सो ए वीडियो रे एक्सक्लूसिवली मु सेमानक विषय रे डिस्कशन करिवि दोज हु आर टार्गेटिंग फॉर 2026 जेमती मु किछि रे एग्जांपल देइथिली दीज आर द स्टूडेंट्स जो मानको मु प्रॉपर्ली गाइड करिकि सेमानको सक्सेस सेमानको मिलिछि सेमाने मेंस वर्तमान लेखि जंते एक्सपेक्टिंग रिजल्ट कमिंग सून नाउ एबे टिके प्लान विषय रे हम टिके डिटेल्स रे डिस्कशन करिवा स्टूडेंट्स वर्तमान सितंबर इज ऑलरेडी कंक्लूडेड अक्टोबर स्टार्ट हे गेला नवंबर डिसेंबर सी ए जो 3 मास होची दिस 3 मंथ्स इज सो क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू इट इज द टाइम वेयर यू कैन मेक अ ब्रेक ए गोटे ही टाइम अछि जोटा कि तुमे तमरो प्रिपरेशंस को मेक करि परिबो केबो ब्रेक करि परिबो गोटे स्टूडेंट जदि एई अक्टोबर नवंबर एंड डिसेंबर ए 3 मास जदि से प्रॉपर्ली प्रिपेयर न करूची देन चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स किमा मेंस इज वेरी लेस ओके द रीजन मु कोन पई कहूची सुनो टिके बिकॉज़ स्टूडेंट्स तुमानकर 24 मई रे परीक्षा हबाकू जाउची सो बिफोर द मंथ ऑफ प्रीलिम्स जो मई मास पूर्वरु 3 to 4 months तुमको डेडिकेटेडली डिवोट करिया पड़ी ओनली प्रीलिम्स किंतु ऑल ऑफ यू नो दैट यूपीएससी रे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विशियस साइकिल व्हाट इज द विशियस साइकिल काहा कहबा सपोज यू हैपन टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम unfortunately you are not able to clear the mains exam then again you have to wait for another 1 year गोटे वर्ष भितर तुम ट्राई करथु आउ किसी एग्जाम दवा पे you must be trying for some state civil services examinations maybe from for some group B or group C or D post also then what happens due to those examination cycle you are not able to read again properly again you qualify the prelims but unable to qualify the mains so this vicious cycle will continue your responsibility your job is to shut it down once for all means to prepare well giving 100% of your time and energy and effort qualify the prelims qualify the mains qualify the interview make it to the finalist this should be your strategy to qualify the prelims exam but let me break down for you people what you should do in these months first in the October this month November December you should jot down your targets you should divide your targets okay it is your responsibility because I do not know what is your target I do not know how much have you covered and I get it many of you might have an understanding sir I do have backlogs I have not read that one see students who is responsible for the backlogs only you are responsible who should read it you should read it isn't it if for some reason you are not able to complete or revise your chapters then it is high time you should make up by yourself that's a very truth I am telling you so October November December ei 3 मास रे हम कोन करिबा my suggestion would be December गोटे इमिडिया मास December is the transition month what do you mean by transition month रो अर्थ होची तुमे मेंस रो प्रीलिम्स को ट्रांजिशन करिवो तो कहया गले अक्टोबर नवंबर एंड मिड ऑफ डिसेंबर एतिक होची तुम पाखरे टाइम अछि only this much of time you do have available in your hand okay students ए जो अक्टोबर नवंबर डिसेंबर रे माय सजेशन वुड बी कि मेंस रो जो सिलेबस अछि ताको मेंस रो सिलेबस अछि स्पेसिफिक ताको कंप्लीट करो okay you should complete the main syllabus along with that you should also focus the optional paper at least optional paper to complete minimum mu kahibi 70-80% your optional has to be completed and ta soito jo manakara CSAT बहुत weak अछि if you think that your CSAT is weak then more suggestion rahibo ki CSAT ta ko tika practice start karo can you do that okay so एतिक तुमे फोकस करो कोन करिवो अक्टोबर नवंबर डिसेंबर माने मिड डिसेंबर मींस 15th ऑफ डिसेंबर पर्यंत मोर सजेशन रहिबो जे मेंस रो सिलेबस को भलो भाबरे प्रिपेयर करो एबे जदी चाहूचो किछि मेंस रो आंसर राइटिंग हो किबा प्रैक्टिस हो किछि नुवा जिंस पाठ पढिया पे चाहूचो इफ यू वांट टू रीड सम न्यू रिपोर्ट्स लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर से रिपोर्ट किछि पढिया पे चाहूचो
किबा तुम जदि चाहूच कोनोसी डेटा कोनोसी यूनाइटेड नेशंस रे किसी डॉक्यूमेंट तुम ऐड ऑन करिया पे चाहूच जोटा को हम साधारणतः कोन कहू we tell it as value added. If you want to make any value addition to your existing content, then this is the time. Okay, October, November, December होची ये ही गोटिए टाइम जो थरे तुम्हें तुम्हारा कंटेंट तुम्हारा पढ़ारे वैल्यू एडिशन करि परिबो. What do you mean value addition? ऑलरेडी कहि सारले. For example, if you happen to read, let's say history रे तुम्हें बिपिन चंद्र पढुचो. So बिपिन चंद्र रे तुमको लागिला जे गोटिए चैप्टर भलो देही मु आ गोटे let's say मु रामचंद्र गुहा किमा प्लास्टिक पार्टीशन हो किमा अलगा किछि बहिरु मु आउटिके ऐड ऑन करया पे चाहू छी. यू कैन डू दैट. फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉलिटी रे तुमे गोटे जिंस पढुचो. ओके, एंड इन इंडियन पॉलिटी एवरीबॉडी रीड्स द एम लक्ष्मीकांत. लेट्स से इफ यू वांट टू मेक सम एडिशन फ्रॉम सुभाष कश्यप और मे बी डीडी बसु, यू कैन डू दैट. सो दिस इज द टाइम जोटी तुमे वैल्यू एडिशन नोट्स तुमे एक्स्ट्रा किछि देई परिबो. दिस इज द ओनली टाइम. एंड सेति भाई कहा जाय अक्टोबर नवेम्बर डिसेंबर मिनिमम मोर तो सजेशन रहिबो योर टॉप गियर हैज टू बी 8 to 10 hours minimum. You should focus on your study. Okay, so what is the conclusion? Conclusion is that October, November and mid of December you should purely focus on your main syllabus, complete your main syllabus, do the revisions, optional also you have to complete. And if you think you are not strong in the CSAT, I would suggest practice CSAT little bit, but not in the month of October and November. In October, November, only few chapters you can see slowly, but from 15th of December with top gear you have to switch to the preliminary examinations. Let's say if you have already qualified prelims and mains in UPSC earlier also, then my suggestion would be you should focus on the mains part. After December, maybe from the month of January, you can focus. Let's say if your base is strong, you have qualified prelims once more. How do you decide? For example, you give a test, you give a mock test, and if you happen to score, let's say 80 or 90, then I would suggest that December month also you can devote for mains examinations. You can switch to prelims exam from the month of January. But if you are a beginner, first timer, you are giving for the preliminary examinations, my suggestion would be October, November, and mid of December, 15th of December, you should focus on the mains, okay, mains optional as well as CSAT. That should be your strategy. And 15th of December, you should slowly transit towards preliminary examinations. So let us talk about the preliminary examinations. Students, all of you know that the syllabus of the preliminary examinations, you have total 200 marks in GS paper 1 and the CSAT paper. The GS2 is also 200 marks. Here is 100 questions, but here is your 80 questions. Students, in your syllabus you have current affairs, history, geography, polity governance, economics and social development, environment ecology and general science and tech. These are the questions, these are the syllabus you have. मुझे काम करी पीडीएफ टा को मु हमर Rayacademy IAS रो टेलीग्राम जो चैनल अछि मु सेठी पोस्ट कर देबी. मोर टेलीग्राम जो चैनल अच्छे मुझे सेठी भी पोस्ट कर देबे. यू कैन आल्सो डाउनलोड इट. एंड आल्सो इन पेपर 2 कौन अच्छी यू हैव कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डेटा सफिशिएंसी. तो वर्तमान जो तुम्हारा टाइम होबा दरकार फ्रॉम द मिड ऑफ 15th of December onwards मु कहबी स्लोली जो तुमे ट्रांजिट करिवो. स्पेसिफिकली ए जो पोर्शंस रहिला current affairs, history, India, world, polity, economics, environment, ecology, general science and tech, यारो टेस्ट तुम्हें धरिबो. टेस्ट कौन? टेस्ट हो दी प्रकार. वन इज PYQ, previous year question papers, and second one is the mock test. Because already तुम्हें जेतोले मु कौन कहली October onwards in the till the mid of December you have already revised this topic. जेमति for example geography जेतोले तुमे मेंस रो कंटेंट रिवाइज करिथिबो डेफिनेटली तुमरा प्रीलिम सेथरे रिवीजन हेइ जिवो. ओके, तो स्पेसिफिकली जदि फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स जदि तुमे रिवाइज करिनो देन इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केते वर्ष रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम मिनिमम तो 5 इयर्स तो दरकार. इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर 10 इयर्स. ओके, मु कहबे जे 5 वर्ष मैंडेटरी बोथ जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2. जदि तुम पाखरे टाइम अछि गो फॉर 10 इयर्स.
एंड मॉक टेस्ट इज द हाई टाइम डिसेंबर मिड ऑफ डिसेंबर होची इज द राइट टाइम किमा जनवरी इज द राइट टाइम मु कहिबी जोथरे तुमे मॉक टेस्ट सीरीज कोठु भी तुमे नै परिबो गोटे भलो अनुष्ठान रो इंस्टीट्यूशंस रो किबा तुमे एवालुएट करि परिबो सेटु तुमे प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करो देन ओनली यू विल बी गेटिंग टू नो बिकॉज मॉक टेस्ट देले ही तुमे जानि परिबो कि क्वेश्चंस किमिति आसुची आ मते मोर लेवल ऑफ प्रिपरेशंस को जागा रे अछि देन ईच एंड एवरी टेस्ट देई सला परे when you analyze and you get to know that okay मोर हिस्ट्री रे स्ट्रेंथ नाही प्रोबेबली ज्योग्राफी रे बेटर स्ट्रेंथ अछि मु टिके हिस्ट्री रे मते फोकस करिवि मे बी इकोनॉमी रे टिके कम स्ट्रेंथ अछि पॉलिटी ऊपर मु टिके अधिक स्ट्रेंथ अछि मे बी इकोनॉमी मते अधिक फोकस करिया पड़िबो सेटा जाना पड़िबो केतेबेले जेतेबेले तुमे गोटे मॉक टेस्ट दोउचो ओके सो स्टूडेंट्स हाउ कैन यू मेक अ प्लान योर प्लान इज टू रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज एंड इंप्रूव रिवाइज करिवो संपूर्ण रूपे सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस मार अर्थ ताकू फर्दर एनालिसिस करबा को पड़िबो व्हाट यू मीन बाय एनालिसिस वेयर आर यू लैकिंग वेयर इज योर स्ट्रेंथ ओके मु केतेटा नेगेटिव मार्किंग मोर केते हैला मोर भूल केते हैला मु को सब्जेक्ट पर्टिकुलरली मु करि पारुनी मु को सब्जेक्ट बेटर करि पारुची से सब जिंस तुम एनालाइज करिवो एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस तुम कौन करिवो ताकू इंप्रूवाइज करिवो सो अगेन मु टारगेट करिवि कि जनवरी 2026 फेब्रुआरी मार्च एंड अप्रैल ओके ए जो 4 मास रहिला मे मंथ 24th ऑफ मे रे तुमरो दिस इज योर डी डे ओके 24 मे रे तुमरो एग्जाम हबो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस तो या पूर्व जो 4 मास रहिला प्रॉपर्ली यू हैव टू डिवोट कंप्लीटली फॉर द प्रिलिम्स सो प्रिलिम्स रे एक्चुअली कौन हुए प्रैक्टिस हुए सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस बहुत सारा टेस्ट सीरीज तुमको प्रैक्टिस करिया पड़िबो सीसा टिके प्रैक्टिस करिया पड़िबो एंड जहां भी हमें मु सिलेबस रे कहली तुमको दिस इज द सिलेबस ए सिलेबस को कौन करिवो मंथ वाइज रे तुमे डिवाइड कर दबो कि सपोज फॉर एग्जांपल तुमको टारगेट देलो कि जनवरी मास रे मु लेट्स से मु हिस्ट्री कंप्लीट करिवि मु ज्योग्राफी कंप्लीट करिवि आ पॉलिटी रे मु एतिक पोर्शन कंप्लीट करिवि ओके अगेन तुमे फेब्रुआरी मास रे पुनी टारगेट दियो कि पॉलिटी रे को मु कंप्लीट करिवि ता सहित एनवायरनमेंट कंप्लीट करिवि बट हिस्ट्री ज्योग्राफी को छाडी दबनी जदी ऑलरेडी पढी जाचो हिस्ट्री ज्योग्राफी को मु रिवीजन 2 करिवि पुनी जेतले तुमे मार्च मास रे आसीबो लेट्स से फॉर एग्जांपल जदी अलगा किसी रहि जाइथिबो ताको तुमे कंप्लीट करिवो बाकी प्रीवियस गुडा को तुमे को करिवो रिवीजन करिवो देन अप्रैल मास रे टारगेट करो जदी किसी रहि जाइथिबो ताको तुमे पुनी रिवीजन करिवो 24 मे मास रे तमरो या टारगेट रहिबा दरकार कि जहां भी संपूर्ण सिलेबस रहिची इंक्लूडिंग योर नोट्स मु कहिबी ओके ए नोट्स गुडा को तुमे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिवो आ इन द मीन टाइम मॉक टेस्ट सबले चलथिबो मॉक टेस्ट दोथिबो एनालाइज करिवो केतटा मु ठीक करूची केतटा भूल करूची मोर नेगेटिव मार्किंग केत कोथरे होउची को टाइप रो क्वेश्चंस रे मु भूल करूची सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भूल करूची कि मु हाउ मेनी टाइप्स रो क्वेश्चंस रे भूल करूची कि बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि मैं असर्शन रीजनिंग टाइप रो क्वेश्चंस भूल करूची कि मैं मैच मेकिंग रो क्वेश्चंस टाइप रे मु भूल करूची तो से सब आइडेंटिफाई कोठ होबो से सब आइडेंटिफाई केवल तुमरो मु कहिबी एथिरे होबो ऑलराइट स्टूडेंट्स सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी आई होप समस्त को क्लैरिटी रही जाइची जदि तुमरो इफ यू हैव दिस क्वेश्चन स्टिल एतिक सब बुझी सला परे भी जदि तुमरो प्रश्न अछि फॉर एग्जांपल इफ योर स्टडी पाथ बहुत अनक्लियर अछि तुमे इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस करूचो तुमे निजर गैप को आइडेंटिफाई करि पारुनो तुमे अपडेटेड रही पारुनो यूपीएससी ट्रेंड सहित किबा आंसर राइटिंग ठीक से हेई पारुनी अकाउंटेबिलिटी तुमे निज प्रति देई पारुनो मल्टीपल रिसोर्सेस रे तुमे कोन पढिबो तुमे बुझी पारुनो यू आर कंफ्यूज्ड एट ऑल lack of timely revision देई पारुनो ओके बैलेंसिंग प्रिपरेशंस विथ अदर रिस्पांसिबिलिटी के जॉब थाई पारंती किबा के हाउस होल्ड रे सी घरे के रही की काम करि पारथांती किबा प्रिपेयर करि पारथांती यू कैन तुमे मोर एई टेलीग्राम जो ग्रुप अछि सेठी तुमे कमेंट करि पारिबो मो सते तुमे चैट करि पारिबो so students thank you so much for watching this video I hope this video will help you immensely targeting for your preparations UPSC 2026 जो मानकर जहाँ भी किसी प्रश्न थी मते निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन रे जणैबो एवं मु आशा करिवि समस्तंकर मु चेष्टा करिवि समस्तंकर कमेंट्स को एड्रेस करबा पई दोज हु आर टारगेटिंग फॉर 2027 UPSC प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी तुम माने कमेंट सेक्शन मते जणाओ बेस्ड ऑन योर डिमांड मु गोटे वीडियो मते प्रिपेयर करिवि सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट